बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केम छो सगला? जे अपने क्रोचेटना अंदर खाकी शिफानी डब्बीना ऊपर कवर रेडी करीशू। आखो अपने कवर गूठीशू। थ्रेड में ब्लीचनो यूज कीधो छे अने लाइट क्रीम कलर छे। कांटो 1.65 mm नो छे। 0 नंबर या तो 1 नंबर अपने यूज करी सकीए छे। सौथी पहला अपने थ्रेड यूज करीशू। फर्स्ट राउंड मैजिक रिंग पर थ्रेड निकालीने 1 चेन 6 SC। SC मीन्स के सिंगल क्रोशियो। 1 2 3 4 5 ने 6 पछी मैजिक रिंग नो थ्रेड छे ने खींची लेवानुं। आ स्मॉल चेन स्कीप करी ने सेकंड चेन छे एना अंदर थी अपने स्लीप स्टीच 1 चेन 6 ने अपने इंक्रीज करीशू। इंक्रीज मीन्स के वधारो। एक ना अंदर अपने 2 टाइम SC करीशू तो 6 ना 12 SC कम्प्लीट थशे। ट्वेल्व SC कम्प्लीट थी गया। स्लीप स्टीच 1 चेन। थर्ड राउंड 1 टाइम SC 1 टाइम इंक्रीज। एना नेक्स्ट में 1 टाइम SC 1 टाइम इंक्रीज 6 टाइम करीशू 18 SC कम्प्लीट थशे। फोर्थ राउंड 2 टाइम SC 1 SC सेकेंड SC। थर्ड ना अंदर अपने इंक्रीज करीशू SC 2 SC 1 2 1 टाइम इंक्रीज 6 टाइम करीशू 24 SC अपना कम्प्लीट थशे। आटलू राउंड अपनु कम्प्लीट थई गयुं। एना पछी अपने खाकी शिफानी डब्बी लेवानुं अने माप जोई लेवानुं के अपने आज रेडी कीधुं छे तो आपनु मैच थाय छे बराबर छे। एना पछी अपने फिफ्थ राउंड में बेक लूप में लईशुं। 1 2 3 SC 1 टाइम इंक्रीज 1 2 3 SC 1 टाइम इंक्रीज 6 टाइम करीशू 30 SC अपना कम्प्लीट थशे। आटलू कम्प्लीट थई गयुं। 1 2 3 चेन लेवानुं। 1 2 चेन स्कीप करीने थर्ड मांथी SC 1 2 3 चेन 1 2 स्कीप करीने थर्ड में SC 1 2 3 चेन 1 2 स्कीप करीने थर्ड मांथी 1 SC। तो अपने चेन वालू रेडी करवानुं छे पूरुं। को अपने एंड सुधी कम्प्लीट करी लीए छे। आ रीते अपनी चेन रेडी थई गई छे। ना पछी अपने आज चेन छे एना अंदर पेटर्न करवानुं छे। 1 टाइम SC DC करीशू 4 टाइम 1 2 3 टाइम 4 DC 1 टाइम SC। एना नेक्स्ट में डायरेक्ट 1 टाइम SC DC 1 2 3 4 1 टाइम SC। एना नेक्स्ट में 1 SC 4 DC 1 2 3 4 1 SC
એટલે આપણે પૂરી પેટર્ન રેડી કરવાની છે 1SC 4DC 1SC આટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એના પછી 1 ચેન લઈને થ્રેડ કટ કરી લેવાનું. મેજિક રિંગનો બી થ્રેડ કટ કરી લેવાનું. એના પછી આપણે અહીંયા જે આપણે પેટર્નો બનાવી હતી બેક લૂપની इतना લઈને 1 ચેન હરેક में આપણે 80 કરીએ છીએ. પૂરો આખો રાઉન્ડ આપણે 80 થી કમ્પ્લીટ કરીશું. જે બેક લૂપ છે એ સગલાના અંદર આજે આપણું થ્રેડ હતું સ્ટાર્ટિંગનું અને આપણે આમ નીચેની સાઈડ ખીચી લેવાનું. આપણે જે પેટર્ન રેડી કરીએ છીએ ऐसे अपने 4 राउंड अपने इतना कंप्लीट करीशू. 1 राउंड कंप्लीट थયું प्लस अपने 3rd राउंड हજી कंप्लीट કરીએ છે. જે अपनी डब्बी છે એના અંદર બરાબર આમ અહીંયા સુધી આવવું જોઈએ. જે કાપો છે આપનો આ સુધી આવે એટલું આપણે રાઉન્ડ कंप्लीट કરવાનું છે. ને 4 રાઉન્ડ कंप्लीट કરીએ છે. પછી ચેક કરી લેવાનું કે આપણે કેટલા રાઉન્ડ હજી જોઈશે. એના પછી આપણે આગળ ઉપરની દિવાલ પાછું વધાવીશું. ટોટલ મારા 5 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થયા. 1 2 3 4 5 1 ચેન લઈને થ્રેડ કટ કરી લેવાનું. આ જે ડબ્બી છે આપની બરાબર આના અંદર બેસી જાય છે એટલે આપણે દિવાલ રેડી કરવાની. એના પછી આપણે હવે ઢાંકણના ઉપર કવર બનાવીએ છીએ. એનું કવર રેડી કરીશું. મેજિક રિંગ वन चेन 6SC 1 2 3 4 5 6 थ्रेड अपने खींची लेवानुं. स्लीप स्टिच 1 चेन सेकंड राउंड 6 टाइम अपने इंक्रीज करीशू. 12 AC कंप्लीट थशे. थर्ड राउंड 1 टाइम SC 1 टाइम इंक्रीज 6 टाइम करीशू. 18 AC अपना कंप्लीट थशे. फोर्थ राउंड 2 SC 1 2 1 टाइम इंक्रीज 6 टाइम करीशू. 24 AC अपना कंप्लीट थशे. आटलू कंप्लीट थई गयुं. एना पछी अपने ढांकण लईने चेक करी लेवानुं. 2 राउंड अपने 24 AC ना कंप्लीट करीशू. बंने वस्तु अपने रेडी है. ढांकणनुं कवर अने डब्बीनुं कवर अपने सगलाने हवे ग्लू थी अटेच करी लेवानो. ग्लू लई लेवानुं. पहले बराबर नीचेनी साइड नाखी देवानुं. पछी आखी आ साइड पर लगावी देवानुं. एना पछी सेम ढांकणना अंदर बी
બરાબર આના અંદર નાખીને આખું સાઈડ પર પૂરું બરાબરથી કવર કરવાનું અને ગ્લુની મદદથી આપણે અટેચ કરવાનું. આ વાળું આપણે ગ્લુ યુઝ કરવાનું છે જેનાથી બરાબરથી આપણું નીકળતું નથી ને અટેચ થઈ જાય છે. ડબ્બીનું કવર અને ઢાંકણનું આપણે રેડી કીધું છે તેને પહેલે બરાબરથી સૂકવા દેવાનું. એના પછી આપણે આને અટેચ કરવાનું. ખાકી શિફાની ડબ્બી આપની બનીને રેડી છે. આપ સગલાને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ વિડીયો લાઈક કરીએ, કે ના સમજ પડે તો કમેન્ટ્સમાં જરૂર પૂછીએ. આપ સગલાનો સપોર્ટ મળે છે એના માટે ઘણું ઘણું શુક્રાન.